5. We have completed 4 units. Now we'll start unit number 5. And the name of the unit is stack. Girls, are you able to see? It is visible? Yes, ma'am. Okay. So name of our new unit is stack. First of all, what is stack? Stack is called as LIFO type of structure. LIFO means last in, first out. So this is stack. Yes. Whenever I will insert or I will push some new items in the stack, it will be pushed one by one from one end only, from this end. I can push the element from this end and I can pop the element from the same end. So it's a linear list with only one end for insertion as well as deletion of the element. Yes. So this is the stack. Whenever I will push some element, for example, 3 elements, 5, 10, 39. So I will push 5 first here. Then next element is 10. So I will push in this way. Then next 39. I will push like this. Yes. Now when I want to pop, whenever we have seen linked list, we are using the term insertion and deletion. Insertion means adding new element. Deletion means deleting one of the element from the list. In stack, insertion is called as push operation and deletion is called as pop operation. So these 3 elements I have pushed. When I want to pop the element from stack, it is the limitation of the stack that you can pop only the element which is pushed last. So I have pushed 39 at last, so I will delete that first. So now these elements will be there. When I will perform one more pop operation, then this element will get deleted or popped from the stack and my stack will having only one element. So last in, first out. That's why stack is called as LIFO type of structure. Last in, first out, or first in, last out. Yes. LIFO. Sorry, LIFO and FILO. First in, last out. But generally जो term refer होती है that is last in, first out. जो last push होता है वो पहले बाहर निकलता है. Okay, so this is stack. Now I will show one by one, step by step operation on the stack. Okay. Initially, when stack is empty, means there is no element in the stack. At that time, there is one pointer or variable called as top, which indicates the top element of the stack. So when stack is empty, your top must be -1. Means आपका top यहाँ पर होगा. It's a -1. Whenever you have an element to be pushed on the stack, at that time you have to increment top first by 1. So -1 plus 1 क्या होगा? 0. This is array representation of the stack. Yes. So stack कहाँ से start? Array कहाँ से start होता है? Index array की 0, 1, 2, 3, 4. Yes or no? So considering that, what we are doing? Increment the top. So top equals to -1 plus 1 equals to 0. Means now top will be here. Okay. And as top is here, I can push first element. So suppose I have pushed 5. Now I want to push next element. So what I will do? I will increment top. So my top is here.
Now I will push the next element. When I have again one more element, I will do the same thing. I will first of all increment the top and then I will push the next element. Again, now suppose I want to perform deletion operation on the stack. So what I will do, first of all, remove the element from the stack and then decrement the top value, because यहाँ पे top की value क्या होगी 0, 1 and 2. Yes. Now first of all remove this element. After removing the element, decrement the top value by 1. Again, next I want to remove one more element. So remove this element and decrement the top. Yes, in this way operations on the stack can be performed. So now you are familiar with what is stack. So before moving to the operations that can be performed on stack, we will see the structure of stack as an abstract data type. So I am again repeating, what is abstract data type? Abstract data type is nothing but the structure defined for stack plus operations that can be performed on the stack using that structure. So combination of this becomes abstract data type for the stack. Yes. So first क्या करोगे आप? Whenever I want to describe or define the structure for stack, always we will use type def struct. क्या लिखोगे? Type def struct stack. Name of my structure is stack because I am using that structure for performing operations on the stack. What is there? This is implementation of stack using array. Okay. Now there must be a limit how many elements you can store in the stack. Yes, here I have stored 3 elements. In the same way, first of all you have to provide size of the stack as it is array, and now I am using here integer type of data, so I will define int data of 10 or instead of 10 I will mention the variable size. Okay, means a stack is implemented using array and that array consists of this size. So you can store the element in stack which is limited by this variable size. Whenever you will include the files in your program, at that time you have to mention the value of size. For example, if value of size is 10, means you can store 10 elements in the stack, not more than that. Yes. And one more element is there, that is top, and again it is of type integer, so int top. Yes. Now define variable, means write stack here. Yes. So this is the structure which is used for manipulating the stack. Now we will define some operations which will use this structure while creating or doing operations. So what are the operations that we can perform on the stack? First one is check the status of the stack, whether stack is empty or not. Yes. So before checking the status, you have to first initialize the stack. Always whenever you want to perform the operations on the stack, initialize stack by indicating top equals to -1. So very first operation that you have to perform on stack is initialization of the stack. Second operation is check whether the stack is empty or not. Third operation is check whether stack is full or not. So initialize stack empty, stack full. Fourth operation is push operation, means
push the element on the stack. And last operation is pop, remove the element from the stack. So these are the basic 5 operations that you can perform on the stack. We will see one by one. So first operation is stack initialization. So I will write initialization operation doesn't return anything. Yes, so for that purpose, the return type for the function is void. So void initialize. Yes, and now what to initialize? That is, you have to initialize the stack. So what you will do, you will provide a parameter that is stack pointer p. ये कैसा होगा? This is the structure for the stack. So whenever you will write stack pointer p, it is nothing but p is a pointer which is pointing to this structure. Okay. Now what you have to do here, you have to initialize stack to -1. Okay. And we have seen the linked list. Whenever we want to insert a data in the linked list or whatever operation we want to perform, हम कैसे लिखते थे? Suppose P is a pointer pointing to a node in the linked list और मुझे उसके data field में कुछ insert करना है. So I am writing P of data equal to X. Yes, means we are using this sign and this field for accessing data field of the node. In the same way, what you have to do, you have to use this pointer P which is pointing to this stack. उस stack में क्या क्या है? Data and top. So before inserting a data, we want to initialize the stack top to -1. So we will write P of top equal to -1. Or instead of P, as it's a stack, we will use S. So we'll write S of top equal to -1. Finish. This is initialization of the stack. Okay. Now, ये हो गया initialization. Now, I want to refer some content of this stack using this structure. For example, मुझे top, I want to search or I want to access the value of stack top. Top is the element which always points to the last element or top element of the stack. अब यहाँ पे देखो top element कौन सा है? 15. Top is pointing to that element. Means top is a variable which always gives you stack top. So when I want to access that, how to access? Or I want to access particular ith element of the stack. How to access it? Because normal array अगर है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर मेरा name of my array is data, so I can use data of I. Yes, or x equals to data of I. Means I will get that ith element from that stack. But here, as we are using structure, so we can access ith element of the stack using S of data. Means ये पॉइंटर जिस स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है उसके डेटा फील्ड का, मीन्स उस डेटा इज नथिंग बट द एरे, नेम ऑफ माय एरे और नेम ऑफ, यस, सो उस एरे के ith एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है. सो आई विल यूज दैट. यस, ith एलिमेंट एक्सेस. Okay, so this is accessing ith element of the stack. Second one is I want to access the value of stack top or top of the stack. So I will use S of top. S is the object of this structure. तो S of top इसका जो भी object हम create करेंगे
For example, stack pointer S. So S of top and S of data. You have to use this only. So S of top gives you top of stack. Okay. Now I want to access top element of the stack. Yes. So वो top element कहाँ होगा? That is in this array. Yes. अब इस array में top element मुझे चाहिए. So I will use S of data. Yes, means ये वाला array. S of data उसका top element. So in bracket S of top. Yes, so it gives me top element of the stack. Top element of stack. Girls, I am again repeating, when I want to access some information from the stack using this structure, first of all I will define this structure, and then to access the information from this structure I will create the object of pointer type of object of that structure, that is stack pointer S. Yes, means ये जो भी stack है उसे point करेगा S. Now why this object is used? Because whenever you want to access the element of the structure, you have to create the object of that structure. So ये object create किया है, then object of this object and then this you can access. So when I want to access ith element of the stack, object arrow data of I. Data is ये array है, because we have implemented stack using array. So S of data of I gives you ith element. When I want to access stack top, then S of top. Means आपको S of top कहाँ पे है ये पता चलेगा, top कहाँ पे. And when you want to access top element of the stack, so top element को कौन point कर रहा है? ये top variable. Yes, तो अगर ये top variable access करना है तो मुझे object use करना पड़ेगा S of top. Yes, अब ये top element किसका? इस array का. ये array भी किसका part है? Structure का. तो मुझे उसे access करने के लिए S of data लिखना पड़ेगा. So S of data of S of top gives me top element of the array. Sorry, top element of the stack. So do you understood this? If you understood, then I will go forward. If you have any doubt, ask me right now. Ma'am, S of top equal to -1. वो line explain कीजिए. Okay. Whenever stack is empty, whenever you are using stack, you want to push some element on the stack. At that time, initially आपका stack empty होना चाहिए. कब होना चाहिए? First time. जब आप program stack के लिए लिखते हो और program execute करते हो, so before start of operation, any operation on the stack, first of all your stack must be empty. So you have to initialize that. So that's why one operation is void initialize. क्या initialize करना है? Stack. Yes. So ये stack का object pass किया है as a parameter. And now अगर मुझे top variable को access करना है तो मुझे वो object use करना होगा. So S of top equal to -1 means before insertion of this 5, top is push the element on the stack. First of all, increment stack by 1. So now my top will be here, and then I can push the element on the stack. Okay, this is compulsory operation once before execution of the program, means or before starting any operation on the stack. Got everybody? Any doubt? yes. टॉप एलिमेंट कैसे रेफर करेगा नहीं समझ में आया है. टॉप एलिमेंट कैसे रेफर करेगा?
इनिशियली टॉप की वैल्यू क्या है? -1, जब कोई भी एलिमेंट नहीं है. Yes, top is -1. When I want to I want to push an element on the stack. At that time, what I will do? वो next operation है. At that time, I will increment top by 1 first before pushing the element on the stack. So top की वैल्यू क्या है? -1. मैं उसमें क्या ऐड करूंगी? 1. So +1 इक्वल टू क्या है? 0. ये लोकेशन इंडेक्स क्या है एरे की? Whenever we are referring array, first index value of array is 0. So now my top is here. Now I can insert. Yes. So top की value है 0. Then next element जब मुझे I have next element to be pushed on the stack. Again I will increment the top. So top 0 था, +1 किया, 1 हो गया. Means 0 से top कहाँ पे आया? 1 से आया, 1 पे आया. Yes, and then I will push the element. Again, same I will repeat for remaining elements also. Yes, in this way, फिर ये element है 0, 1, 2, 3, 4, 5. Means there is no need to remember index of any element. Whenever we are referring top will do all the things. We can perform push or pop operation where when top is giving you the location. Every time top is pointing to the topmost element of the stack. इसके बाद भी मुझे अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, I will refer this top variable. I will increment it, तो वो मुझे नेक्स्ट पोजीशन देगा जहां पे मैं इंसर्ट करूंगी. अगर मुझे डिलीट करना है तो बाइंडिंग है, the last element or top element of the stack will be popped or removed from the stack. So वो भी किससे मिलेगा? मुझे टॉप वेरिएबल से ही मिलेगा. ओके, एनी मोर डाउट? स्टार्ट में ही टॉप को 0 इनिशियलाइज क्यों नहीं करते मैम? कंपाइलर, जस्ट अ मिनट, आई विल टेक 1 by 1. स्टार्ट में ही टॉप को 0 इनिशियलाइज क्यों नहीं करते? ओके, इनिशियल अगर मैंने टॉप को 0 से इनिशियलाइज कर दिया तो क्या होगा? आई एम राइटिंग 1 पुश ऑपरेशन. यस, उस पुश ऑपरेशन में मैं क्या करूंगी कि मैं पुश करती जाऊंगी आइटम्स और एलिमेंट्स ऑन द स्टैक. तो व्हाट आई एम अज्यूमिंग, जहां पे मेरा टॉप है उसे मैं इंक्रीमेंट करूंगी और फिर एलिमेंट पुश करूंगी. यस, अगर मैंने टॉप को 0 पे इंक्रीमेंट 0 से इनिशियलाइज किया तो मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? इंक्रीमेंट द टॉप. तो मेरा टॉप यहाँ पे आएगा, ये पोजीशन एम्प्टी रह गई. सो टू अवॉइड दैट, बिकॉज पुश ऑपरेशन, अगर मुझे 10 एलिमेंट पुश करने हैं, आई विल राइट डाउन 1 पुश ऑपरेशन ओनली एंड आई विल कॉल दैट पुश ऑपरेशन 10 टाइम्स. यस और नो? और मैं लिख क्या रही हूँ पुश ऑपरेशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीमेंट द टॉप, देन इंसर्ट द एलिमेंट. यस, सो दैट इज व्हाई इट इज रिस्ट्रिक्शन दैट बिफोर कॉल टू द पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज टॉप टू -1. यस, बीना, गायत्री, गॉट? Give me the answer whether you understood or not. Who is Veena Gayatri? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am, understood. What is your name? Veena. Okay. You are branch and student? Yes, ma'am. Okay, okay. Sorry, first time ये नाम देखा इसलिए पूछा मैंने. Okay, next question is, ma'am, the compiler won't know what size is. Do I need to specify its data type or something somewhere? Yes. Whenever you are including files, क्या करते हो आप? Hash include, क्या लिखते हो? IOStream. Yes. And then you are writing using namespace standard.
So after that, you have to mention hash define size 10. उसका मीनिंग क्या है कि साइज करके एक वेरिएबल है whose size is 10. Means whenever this variable comes, size जहां पे भी रेफर होगा, instead of that size you have to consider 10 value. Okay? Because अगर हम मैं अगर यहाँ पे लिखूं data of 10 means every time I am restricting that my stack is having size 10 element only. लेकिन change हो सकता है ना size as per requirement. So for that purpose I am referring this variable size. Got? अगर हमें साइज यूजर से लेना है तो क्या size user से लेना है? Yes, you can take in that way also. Refer size here. Yes. Just what you have to do, you can ask user enter size of the stack. So user enter करेगा 5, 10, 7, whatever value. Then you have to assign that value here. In that case, अगर आप size नहीं लिखोगे, you can use directly 7 अगर enter किया user ने data of 7. But every time आगे जब हम push and pop करेंगे, we are referring this size. So at that time, instead of size, you have to write down that specific value. Okay? Bipali, got your answer? Yes. Okay. So now we'll move forward. ये लिखा है आपने? Because I am going to erase it. कर दो erase? Yes or no? We have seen the first operation, that is initialization. Now we'll see next operation, empty. Int empty stack pointer s. Yes. Now, first of all, what this operation performs? This operation will check whether stack is empty or not. So, if stack is empty, it will return 1. If stack is not empty, it will return 0. That's why return type is integer. So, what you will do here, you have to write. कैसे चेक करोगे stack empty है क्या? अगर stack empty हो गया तो top की value क्या होगी? The value of top must be -1. So here you can write if s of top equal to -1, then return 1. Else return 0. Yes. Now why this operation is required? Whenever you want to perform pop operation, means element delete करना है आपको. Deletion or removing the element from stack is called as pop. Whenever you want to perform pop operation, suppose your stack is empty and still you are performing pop operation. At that time, you can display the message. You can check whether stack is empty or not. If stack is empty, you can display the message stack is empty, can't delete or can't perform pop operation. From the pop operation. That's why this function is important. Okay. In this way, one more function is there, that is int full stack s. If stack is full, it will return 1. If stack is not full, it will return 0. Means, अगर stack full है, you cannot insert or you cannot push any element on the stack. Yes, and if stack is not full, you can push any element. Now, how will you check that stack is full?
basically we are implementing stack as array. So array full कब होता है? Can anybody tell me? And top is equals to size. Equal to size, जितनी उसकी साइज मेंशन की है उतने एलिमेंट जब आप पुश करोगे, आफ्टर दैट यू कैनॉट पुश बिकॉज इट्स लिमिट इज ओवर. सो हियर यू कैन चेक यूजिंग कंडीशन इफ s of top, yes, s of top is equal to size minus 1. अब size minus 1 क्यों? हमारा टॉप शुरू कहाँ से हो रहा है? 0 से. इफ माई साइज ऑफ माई array or stack is 5 element, so my top will start from 0 and it will increment till 4. 0, 1, 2, 3 and 4. 4 पे ही आपके 5 एलिमेंट कंप्लीट हो जाते हैं. दैट्स व्हाई साइज माइनस 1. यूजर क्या मेंशन करेगा? 5 एलिमेंट. यस, सो 5 minus 1, 4. 0 to 4. So if stack s of top is equal to size minus 1, means stack is full. So here return 1, else return 0. Got? Write down this. ओके, इरेज कर दूं ये. नेक्स्ट ऑपरेशन भी देखने हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is push operation. Push पैरामीटर होगा stack top, sorry stack pointer s. Okay, and एक ही होगा क्या पैरामीटर? No. In addition to that, the variable or element that you are pushing on the stack. So 2 parameters are required. Whenever you are pushing something, you don't require to return anything. So इसका return type जो होगा that is void. Okay. Now, as I explained earlier, for push operation on the stack, what you have to do, first of all, increment the top. Top कैसे access करना है? S of top. So S of top equal to S of top plus 1. पहले top को increment करो. अगर वो if the top is at -1, it will be incremented to 0. If top is at 0, it will be incremented to 1. Yes. So increment the top and then push the element. कहाँ पे push करेंगे? Where stack top is pointing. So stack top मुझे access करना है तो कैसे लिखूंगी मैं? S of data, S of top equal to X. Means place the element in the stack pointed by top. Got? Only 2 instructions are there for pushing the element on the stack. Next operation is pop operation. Now pop operation is removing the element from the stack and returning it to the main program. Yes, because there are some condition or cases where we will require that element. कौन सा delete हुआ है ये भी हमें पता होना चाहिए. Yes, तो अगर हम वो element print करते हैं कि this element is deleted, तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा element pop हुआ है. So for that purpose, after deletion of the element or removing the element from stack,
you should return that element to the main program. That's why its return type is int. Int pop. Parameter कितने लगेंगे? Only one. Yes, that is stack object. Now one variable will be required because suppose I am deleting or copying this element. So there must be a variable which will hold this element. So for that purpose, I will declare one element int x. Yes, and then what I will do? First of all, copy the element from stack to this variable. Then decrement the top pointer. Yes, so what I will do? X equals to कौन सा एलिमेंट कॉपी करना है मुझे? Where और the element which is referred by top. So stack top मुझे एक्सेस करना है तो s of data, s of top. So top ने जो पॉइंट किया है इस स्टैक का डेटा, that element you have to copy in X and then s of top equal to s of top minus 1. Yes, means ये एलिमेंट x में कॉपी हो गया, टॉप को डिक्रीमेंट करो. सो टॉप यहाँ पे पॉइंट करेगा. नाउ क्या बोलोगे आप? एक्चुअली डिलीट हुआ क्या वो एलिमेंट स्टैक से? नो, वो एलिमेंट वहीं पर है स्टैक में, बट वी हैव कॉपीड दैट एलिमेंट x एंड वी हैव डिक्रीमेंटेड टॉप वेरिएबल. सो नाउ टॉप इज पॉइंटिंग हियर. सो इससे कुछ प्रॉब्लम होगा? नो, ये रेफर होगा आगे? नहीं होगा. टॉप इज नॉट पॉइंटिंग. नाउ टॉप इज पॉइंटिंग टू दिस. अगेन सपोज मुझे ये भी डिलीट करना है, सो इसके बाद मैं लिखूंगी रिटर्न x. सो x विल बी रिटर्न टू मेन प्रोग्राम. तो मैं वो प्रिंट करूंगी दैट दिस एलिमेंट इज पॉप्ड. नेक्स्ट मैं ये पॉप करूंगी एंड आई विल डिस्प्ले दैट 10, द एलिमेंट 10 इज पॉप्ड. Then again I will decrement the top. Top is here now. So I will pop that also. So वो भी pop करूंगी और print करूंगी that element 5 is popped. Now top will be -1 after popping last element from the stack. Top is -1. अब अगर मुझे कुछ new element insert करने हैं stack में, so again I will call push operation. और क्या होगा? If you are using same stack, so new element will replace these elements. Okay? Because आप बोलोगे कि ये आप pop लिख रहे हो लेकिन कहाँ पे delete कर रहे हो element? You are copying the element. Yes? So this is the answer. Got everybody? Any doubt in this? If you have any doubt, you can ask me. Get your doubt clear. मैम पॉप का फिर से एक्सप्लेन करो ना. Pop वाला, okay. Pop means I want to remove the element from the stack. Remove करना means मुझे कहीं पे वो use होगा element या फिर I just want to know that this element is removed from the stack. So that removing is done by the pop function. So what it do? It will copy the top element because it is binding on us. We can remove only the top element from the stack because there is only one end. ये है where through this end only we can push and we can pop. Yes. So जैसे आपने push किया तो last element ये है तो वही पहले remove होगा. ये element कौन point करता है? Top. So first of all, copy that element from stack to one variable. Yes, and return that variable. Okay. So उसके बाद after copying the element, decrement the top. So top will point here और यहाँ पे next step पे. Yes. अब top यहाँ पर है तो ये 15 यहाँ पे as it is भी रहा तो भी चलेगा because हम उसे यूज करने वाले है ही नहीं. नेक्स्ट एलिमेंट अगर आपको रिमूव करना है तो वो एलिमेंट कौन सा है? ये वाला. यस, या इसके बारे में भूल जाओ. रिमूव कर दिया, सपोज चला गया. सो फर्स्ट एलिमेंट कॉपी किया,
स्टैक टॉप को डिक्रीमेंट किया और वो एलिमेंट मेन फंक्शन को रिटर्न किया, so that I can print the answer or in output that element 15 is popped. Ab now top is pointing to this. This is my top stack top. So I want to remove this. Next अगर pop operation perform करना है तो यही remove होगा. So copy this into one variable, decrement the top. Top will be here. Again, if I want to perform one more pop operation, again the top element of the stack will be removed. So this is now my top element. Copy it in one variable, decrement the top. Now top is -1. If again I am trying to pop the element, क्या होगा? यहाँ पर मैंने चेक किया है क्या इस फंक्शन में कि whether stack is empty or not? नहीं. ओके तो हमें करना क्या है? Whenever we are calling pop operation, before using this pop operation, you have to check whether stack is empty or not. If stack is empty, then display the message stack is empty, can't pop. अगर stack empty नहीं है, else pop this or write this function. In this way, stack empty, stack full operation यहाँ पर use होते हैं. यहाँ पे भी ये push operation है. Before call to this push operation, because जहां पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो पुश करने हैं तो पहले चेक करो whether stack is full. अगर stack full है then display the message that stack is full, can't push new element, else push the element, means write this code. either उस कोड में ये फंक्शन कॉल करो या फिर उस कोड में फंक्शन कॉल करने से फंक्शन कॉल नहीं करना है तो ये दो इंस्ट्रक्शंस लिखो. मैम वो पॉप फंक्शन कहाँ पे ऑपरेट होगा? कहाँ पे ऑपरेट होगा मीन्स जब आप मेन फंक्शन लिखोगे तो वहां पे ये सारे फंक्शंस वन बाय वन कॉल करोगे ना. फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास एलिमेंट है, आपको प्रोग्राम लिख के दिखाओ. ये लिखा है आपने सबने? यस मैम. एक आइडिया देती हूँ, ये इरेज कर दूं. आपको एक आइडिया दे देती हूँ हाउ ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म. This is my stack. Initially my top is equal to -1. Okay. Now जब आप int main function लिखते हो तो आप उसमें क्या करोगे? सबसे पहले stack pointer s. Yes. Then आप लिखोगे cout. Enter total number of स्टैक एलिमेंट. यस आप यूजर से पूछोगे ना कितने एलिमेंट स्टैक पे पुश करने हैं. यस एंड देन सी में आप लिखोगे n. दिस इज C++ लैंग्वेज. ओके सी इन n मीन्स अगर मुझे 5 एलिमेंट पुश करने हैं स्टैक पे देन n कंसिस्ट ऑफ 5. देन व्हाट यू विल डू, इस पे आप आई एम अज्यूमिंग दैट जो फंक्शंस मैंने अभी बताए इनिशियलाइज, एम्प्टी, फुल, पुश, पॉप, ऑल दीज ऑपरेशंस यू हैव डिफाइंड बिफोर दिस मेन. यस C++ में कर सकते हो ना आप. यू विल राइट द क्लास सपोज स्टैक एस और जो भी है या स्टैक ऑपरेशन, उसके पब्लिक सेक्शन में यू विल डिफाइन ऑल दीज ऑपरेशंस and you will close the definition, close the class definition using semicolon. Okay, and then you will call int main function. Now here what you will do, you want to insert element. Yes, तो क्या करोगे?
for I equals to 0, I less than n, I plus plus. Yes. Now what you will do, अगर आपने साइज यूज की है तो आप यहाँ पे लिखोगे साइज इक्वल टू n. यस, जितने एलिमेंट है उतनी ही मुझे साइज चाहिए सपोज. यस, तो 5 मेरी साइज हो गई. नाउ व्हाट यू विल डू, फर्स्ट एलिमेंट यूजर से एक्सेप्ट करोगे एंड यू विल पुश इट. सो यू विल डिस्प्ले मैसेज हियर, सी आउट एंटर फर्स्ट एलिमेंट, C in X. Yes. Now, what you will do? चेक करो स्टैक फुल है का इंसर्ट करने से पहले. सो यू विल राइट इफ नॉट empty stack S. अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो ये रिटर्न करेगा 1. 1 का निगेशन क्या आएगा, 0. यस, अगर 0 है तो क्या करो, नॉट एम्प्टी स्टैक, देन कॉल द पुश ऑपरेशन. सो यू विल से क्या करोगे, पुश S, X. फंक्शन कॉल किया. ये फंक्शन कुछ रिटर्न करने वाला है नहीं. अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो पुश करो, अगर एम्प्टी है तो मीन्स इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो गई है तो एल्स में क्या करोगे, सी आउट दैट स्टैक इज फुल. यस सर, ये हो गया. I 0 था, I 1 हो गया. फर्स्ट एलिमेंट आपने पुश किया, पुश ऑपरेशन कॉल किया तो क्या हो गया, टॉप आपका इंक्रीमेंट हुआ. सपोज एक एलिमेंट मैंने इंसर्ट किया. नाउ आई विल इंक्रीमेंट, I becomes 1. 1 is less than 5. यस, सेकेंड एलिमेंट यूजर से पूछोगे और वो इंसर्ट करोगे. सपोज सेकेंड है 20. सो 20 एलिमेंट मूव करने से पहले पुश ऑपरेशन में क्या किया, टॉप को इंक्रीमेंट किया एंड देन 20 इंसर्ट किया. नेक्स्ट है सपोज 30, 40 एंड 50. सो नाउ माय टॉप इज हियर. यस, जब ये एलिमेंट इंसर्ट होगा एट दैट टाइम वैल्यू ऑफ I इज 4. नेक्स्ट वैल्यू ऑफ I बिकम्स 5. 5 इज लेस देन 5. नो, कम आउट ऑफ द लूप. अदरवाइज अगर ऐसे भी नहीं करना है तो क्या करोगे, सॉरी एम्प्टी का नहीं, यहाँ पे फुल लिखना चाहिए था, सॉरी फुल. एंटर फर्स्ट एलिमेंट, देन अगर स्टैक फुल नहीं है तो पुश करो, else display the message stack is full. Again ask user, क्या करोगे, पूछोगे नेक्स्ट एलिमेंट. अब मैंने इसके लिए फॉर लूप लिया था. अगर आपको फॉर लूप नहीं लेना है, व्हाट यू विल डू इन दैट केस, यू विल यूज डू वाइल लूप या वाइल लूप. वाइल में क्या करोगे, एक मैंने पिछले में असाइनमेंट में भी बताया था, while instead of this x equal to get char not equal to जीरो था क्या, स्लैश एन था, स्लैश एन मीन्स जब तक यूजर एंटर करता है. सपोज मैंने यू आस्क यूजर एंटर, यूजर से बोला एंटर द नंबर्स और एंटर एलिमेंट्स. यहाँ पे मैंने कहीं पे साइज मेंशन की है नहीं.
x equals to getChar. getChar is the function which accepts input from user. Okay, one input from user, assign it to x variable, will perform the operation, again accepts next input from user, assign it to x, perform the operation. कब तक? जब तक यूजर एंटर प्रेस नहीं करता. सो फॉर एग्जाम्पल ये मैसेज डिस्प्ले हो गया, एंटर द एलिमेंट, आई विल गिव 10, 20, 30, 40 and then I will press enter. So at that time 4 elements will be inserted in the stack. Now if size of my stack is only 2, for example मैंने ऊपर जब हैश इंक्लूड करते हैं तब मैंने लिखा हैश डिफाइन साइज 2, means I can insert only 2 elements in that case. So what we'll do, if not full, push, पहला एलिमेंट इंसर्ट होगा. सपोज दिस इज माय स्टैक, 2 ही एलिमेंट का है, सो पहला एलिमेंट इंसर्ट हो गया, अगेन दूसरा एलिमेंट भी इंसर्ट हो गया. यस, अब जब तीसरा एलिमेंट आप इंसर्ट करने जाओगे, इसमें आ गया x में 30, यहाँ पे चेक होगा पहले स्टैक फुल है क्या. फुल इज द फंक्शन, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा. फुल में हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ स्टैक s ऑफ टॉप इज इक्वल टू साइज -1 है तो वो रिटर्न क्या करेगा, 1. अगर उसने 1 रिटर्न किया तो यहाँ पे 0 आंसर आएगा. 0 आंसर आएगा तो ये ऑपरेट होगा ही नहीं, वो एल्स में जाएगा. इन दिस वे वी कैन इंसर्ट. Same way you can delete. You can ask user how many element you want to delete from stack or just delete. अब ये जनरली ये जो है, अगर आप मेनू ड्रिवन प्रोग्राम लिखते हो, in that menu driven program, suppose your first choice is push, second choice is pop. So user से आप पूछते रहोगे whether you want to push, whether you want to pop, push करना है, pop करना है या exit करना है. According to that ये functions आप कॉल करोगे. Yes, at least idea आ गया stack को कैसे implement करना है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Today we have seen implementation of stack using array. In next lecture, we will see implementation of stack using linked list, because you must have an idea how to implement stack using linked list. Okay. And after that, we have we have to study applications of the stack, and that applications is nothing but the problem solving है. Yes, जैसे हमें linked list में देखे ना problem, linked list represent करो using GLL या polynomial represent करो using GLL. तो जैसे problem solve किए वैसे problem solving है complete unit में. Okay, just there are 2 assignments on the stack that we are going to perform in practical. Yes, in that assignment we are implementing stack using array only. We are not using linked list. Okay, but for your sake of understanding and your knowledge, we will see how to implement stack using linked list in next lecture. Okay, got? You have next lecture also. So I am leaving. I will share the attendance on WhatsApp group. Okay. Chalo, bye.